जय जगन्नाथ वेलकम टू CHSE ओडिया समस्त को आज क्लास को स्वागत आमे आमे लास्ट थर्मोडायनामिक्स रो 6टा लेक्चर ऑलरेडी पढ़ी सारछे एटा 7 नंबर लेक्चर आमर यूट्यूब रे CHSE ओडिया चैनल रे सो एठी आमे बोथ सीबीएसई और CHSE दी जन जगह पई पढुचे गोटे कंबाइंड पार्ट ऑलरेडी आमर 6टा लेक्चर आमे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करथिले एठी आमे देखिबा एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन माने आमे कोन होची ना जोटी तुमर हीट कांस्टेंट होची ठीक अछि गोटे सिस्टम रहची जोटे हीट कोन रहची कांस्टेंट होची ओके हीट कांस्टेंट रहिले ताले एठी किंतु माने सिस्टम टा एक्सपांड करूची माने ऑटोमेटिकली कोन होची धर फॉर एग्जांपल तुमे गोटे जगह रे बलून रे कोन करथिला गोटे जगह रे बलून रे बहुत प्रेशर दे देथिलो बा बहुत प्रेशर होतिला हठात कोन कलो ताको पानी भीतर नेकी छाड़ देलो तो धीरे धीरे से कंप्रेस होची तो पानी भीतर जगहटा धीरे धीरे एक्सपांड होची सिस्टम टा सो ए जिनसटा तुमर हीट कंटेंट सेम रोची हीट कंटेंट किंतु सेम रोची माने टोटल हीट रो लेवल किछि होनी यार अर्थ मन को मन तार कंप्रेस हे किथिला जेतोल तुमे छाड़ी देलो से माने हाई प्रेशर हे किथिला जेतोल ताको छाड़ी देलो से एक्सपांड करिया को लागिला सो एटा ऑटोमेटिक एक्सपांड करला गोटे सिस्टम टा कोन हला ऑटोमेटिकली एक्सपांड कला हला एक्सपांड कला ए केस रे अनुरूपा पटनायक गुड इवनिंग अनुरूपा जीके फैक्ट्स नारायण गुड इवनिंग जय जगन्नाथ बहुत बढ़िया जॉइन समस्त जॉइन कर एवं तुम सांगसाथी मानू भी कह जॉइन करने ताले एठी हमें जदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करिबा फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस रे जो माने अच्छा मीट रे कह एडियाबैटिक प्रोसेस पई कोन जीरो रहइबो सर हीट इज जीरो वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर dq इज इक्वल टू जीरो हीट टा हमर जीरो रहइबो dq जीरो रहले ताले कोन आसीबो dq इज इक्वल टू du प्लस dw अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बा dq इज इक्वल टू du प्लस pdv अकॉर्डिंग टू कोन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ताले कोन आसीबो एटा du इज इक्वल टू माइनस dw बट हम जदि देखिबा एठी कौन होची ना जेहेतु एटा फ्री एक्सपांशन करूची माने ऑटोमेटिक एक्सपांशन करूची वर्क डन बाय द सिस्टम कौन हो जीवो माने एक्सटर्नल वर्क किछ होची कि एक्सटर्नल वर्क किछ होची नो सर एक्सटर्नल वर्क हो नाही जेहेतु एटा माने ए सिस्टम भितरे से बळा किछ रिजिडली एक्सपांड होनी माने एडी ऑब्वियसली तार माने एडी हती कि वैक्यूम थिबो ठीक अछि ए जगहटा वैक्यूम थिबो आ जेतो ये ऑटोमेटिक एक्सपांड कला माने जेमिति तुमरो केमथि हला तुमे कि छोटे क्लीनर देथिलो बा कि छोटे वैक्यूम जिंस देथिलो बा तुमे गोटे जगह रे कोठी गोटे हाई प्रेशर देथिलो जेमिति से टच छाड़ देला से ऑटोमेटिक पळास लाइक ए सिरिंज वैक्यूम तुमे हाथ को टच करबो एभला प्रेस करी नबो जेमिति छाड़ देबो से पुनी बैक पळासियो तुम्हें देखी सीरीज देखी ना हाथ को टच करो ये तुम्हें कर हाथ को टच कर सीरीज नब सीरीज नहीं कि प्रेस कर प्रेस कला धीरे 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 देखो जमी छाड़देव सीरीजटा ऑटोमेटिक मन को मन जी जगह प्रेस कर पुणी अथरे से जगह बैक पलैस हुए ना नहीं देखी ये केबे यस सर यस सो दिस इज द एक्सपेंशन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन बेसिकली एटा वैक्यूम थिबो आ ए पार्टटा तुमरो गैस थिबो तो जेतले प्रेशर तुमे अप्लाई करिकि थिबो से माने कंप्रेस हेकि थिबो जेमिति छाड़ देबो से ओरिजिनल स्टेट को पळासिबो किंतु मन रख एटी किछि वर्क डन होबनी सो एटी हम कहि परिबा दैट हियर नो वर्क इज डन हियर नो वर्क इज डन फॉर फ्री एक्सपेंशन फ्रीली एक्सपेंशन करिला
एक्स्ट्रा किसी वर्क करिया पड़लानी नो वर्क इट इज ऑन फॉर फ्री एक्सपेंशन दैट्स व्हाई कौन आसीबो dw is 0 अच्छा dw 0 हेले अल्टीमेटली कौन आसिला dq 0 dw 0 ताले du is equal to कौन आसीबो 0 ताले इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 आसीबो सो इंटरनल एनर्जी चेंज जहा 0 आसीबो दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी is equal to 0 फाइनल माइनस इनिशियल होची du is equal to 0 फर्दर कौन आसीबो uf is equal to ui फाइनल is equal to इनिशियल इज इट क्लियर बुझेला सर Yes, sir. सर वैक्यूम माने कोन वैक्यूम माने जोटी एयर टोटली नथिबो मा विदाउट एयर ठीक अछि वैक्यूम क्लीनर रहे सेटा विदाउट एयर नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस माने तुमको कहैछि पुणी उतरे ता पूर्व अवस्था को पळे आसीबो राइट साइक्लिक प्रोसेस रे पुणी थर्मल इक्विलिब्रियम अरेंज हबो बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल स्टेट सो हमें लिखि परिबा दैट इन ए साइक्लिक प्रोसेस रे कोन हबो the initial and final states of states are same so cyclic process रे initial और final state same that is ui is equal to uf initial जहाँ थिबो internal energy finally भी same आसीबो that is del u is equal to 0 तो du 0 आसिले फर्दर कोन हबो हमारा dq is equal to du plus pdv by dq plus dw so dq is equal to 0 plus dw that is dq is equal to dw आसीबो आ गोटे केस रे आस्तिला dq is equal to minus dw कोडे के कहि परिबो सेडा सॉरी du is equal to minus dw सर adiabatic process. वेरी गुड adiabatic process बढ़िया आंसर मन रखछ ये गला हमर टोटल रूप रे डिफरेंट प्रोसेस बा एप्लीकेशन ऑफ योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रे हला फर्स्ट एप्लीकेशन कोन रही छी एप्लीकेशन ताले देखिबा में लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ कोन रही छी यार लिमिटेशन एक्चुअली को कारण रो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमें यूटिलाइज कर पालेनी बा अप्लाई करले कोन रीजन रही छी लिमिटेशन पूर्व आउरी गोटे पॉइंट थिला तुमर वर्क डन को नहीं की यस वर्क डन को नहीं की थिला गोटे पॉइंट जे तो मते दीड जगह देखियो पड़ुची माने बोथ सीबीएसई और सीएचएस दीड जगह कंबाइन पार्ट करूची जेमती सब पिला ये ही परिबे तो आउ टिके हमें लिखबा सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ सिग्निफिकेंस कोन यार फायदा रही बा इम्पोर्टेंस कौन रही सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ रो इम्पोर्टेंस कौन रही फर्स्ट लॉ रो इम्पोर्टेंस जो देखिबा इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग a direct relationship between heat and work heat और work भितर direct relationship explain करी होची by means of first law generally सेटा ही first law heat and work mathematical part टा ताको जेतोला में explain करछे in wording सेटा ही जाउची first law
ओके तापर सेकंड पार्ट आछी कोन वर्क एंड एनर्जी cannot be produced from nothing माने टोटली वर्क आउ एनर्जी जदि हमको दरकार किछि हेले निहाती नबाकू पड़िबो तो आमे किछि न नै थिले माने इंटरनल एनर्जी जीरो थिले वर्क आउ ये अलग अलग एक्सप्रेशन आसीबो इंटरनल एनर्जी अच्छा इंटरनल एनर्जी जीरो कोठी हैला कोठी इंटरनल सर एनर्जी adiabatic free expansion adiabatic free expansion आउ cyclic process वेरी गुड साइक्लिक प्रोसेस रे वेरी नेक्स्ट हम देखिबा लिमिटेशन कोन रहै छी यार कोन डिमेरिट्स कोन रहै छी लिमिटेशंस सर सेकंड पॉइंट बुझ पालेनी माने वर्क एंड एनर्जी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉरी कैनॉट बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नथिंग माने किछि न थाई कि हेई परिबो नै वर्क किछि थिबा को पड़ियो निहाती भाव किछि थिबा को पड़ियो वर्क आउ हीट हबा को माने वर्क आउ एनर्जी प्रोड्यूस हबा को ठीक अछि सो work and energy cannot be produced from a system without consuming energy nothing लिखिया अपेक्षा हिंदी लिखि लबो from a system without consuming energy माने किछि ना किछि एनर्जी लॉस हबो विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी वर्क आउ एनर्जी किछि ना किछि तुमर कोन हबो लॉस हबो विदाउट एनी लॉस रे किछि हे परिबो नाही माने किछि ना किछि लॉस हे जो से लॉस टा कोन इंटरनल एनर्जी से लॉस टा ही होती तुम्हारा इंटरनल एनर्जी तापर आसीबो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ लिमिटेशन माने कोन कोन यार दोष त्रुटि रहला हमर तो केमिस्ट्री सब बेले तुम देखतियो दोष त्रुटि सब बेले देखाउची कोन दोष त्रुटि इट डज नॉट प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को डायरेक्शन रे जीवो डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो आ कोन इट इज अनेबल टू नेक्स्ट आछि 100% work done is not practically achieved practically achieve करी हबो नाही किंतु फास्ट लॉ रे कहउछि जे इडा भी अचीव करी हबो सो लीव इट ए दिडा होछि लिमिटेशन ठीक अछि नेक्स्ट हम देखिबा वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस कोन कोन एक्सप्रेशन कोन हबो वर्क डन रो डिफरेंट प्रोसेस रे हमरो वर्क डन रो एक्सप्रेशन कोन रहइबो सो हेडिंग दियो वर्क इन थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर हम देखिबा सेकंड लॉ आउ एंट्रोपी सेकंड लॉ एंट्रोपी सरले सरी जो माने 90% तापर प्रॉब्लम केवल रहिबो ओके प्रॉब्लम ही रहिबो बाकी सब सर जो दाइडा को बुझिया गले लेट्स कंसीडर ए गैस हमने गैसियस सिस्टम कंसीडर करबा लेट्स कंसीडर ए गैस
contained in a cylinder fixed with contained in a cylinder fixed with a movable fixed contained with a sorry let's consider a gas contained in a cylinder fixed with a movable frictionless piston कौन कहला ध्यान दे सुन आम गोटे गैस देखा गोटे कंटेनर रही है अच्छा एबे एटा की प्रोसेस है किए कहि परिबो चारियाडो बंद हो गला डबल गार माने ऑब्वियसली हीट भी जाई परिबनी एटा की प्रोसेस की कहि परिबो आइसोलेटेड सिस्टम सॉरी प्रोसेस कहि देली सिस्टम होबा कथा क्वेश्चन रे सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम आइसोथर्मल जहाँ आइसोलेटेड सेडा ना 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 आइसोथर्मल माने टेम्परेचर सेम आइसोलेटेड माने तुमरा आइसोलेटेड रो गोटे एग्जांपल होची एडियाबेटिक प्रोसेस ठीक अछि आइसोथर्मल आ आइसोलेटेड दीटा अलग अलग जिंस आइसोलेटेड रे तमर मेटर जीवनी किबा हीट भी जीवनी तो एडियाबेटिक आइसोलेटेड रो गोटे पार्ट एक्चुअली ठीक अछि एडियाबेटिक रे तुमर मेटर हीट जीवा को होनी किंतु मेटर जाई पारे तो सपोज गोटे हमें कंसीडर करले प्रथमे इनिशियली गोटे सिस्टम थिला एटी कोन थिला इनिशियली यार प्रेशर थिला A इज P1 V1 और T1 और B फाइनल जेतोला आसिला यार प्रेशर P2 V2 और T2 आसिला ठीक अछि एवला प्रेशर चेंज हैला आ वैल्यू भी से अनुसार चेंज हैला ताले थर्मोडायनामिक वर्क जदि हम देखिबा कोन हला मूवेबल फ्रिक्शन एडा होची तुमरो फ्रिक्शनलेस पिस्टन माने पिस्टन रे जदि फ्रिक्शन रहि जिवो सी आउरी अधिक टाइम लागि जिवो तुमको कोन हो मूव करिया को सो फ्रिक्शन रहि ची हला तापरे हमें जदि देखिबा जेतोला हमें W8 दबा टॉप रे माने ऊपर जेतोला हमें W8 देला ये एती तळिया आसिला बहुत तळिया आसिला if weights are gradually removed the gas expands slowly so एटे लिखिबा let's W8 is given on the piston so piston ऊपर कोन कले हमें weight रखी देले हमें वेट रखिदेले माने तार माने हमें बहुत सारा बटकरा बा बहुत सारा वेट आन देले बोरी रखिदेले 10 बोरी 20 बोरी एभला रखिदेले बोरा बा अखा से दबी गला ठीक अछि किंतु दबी गला जे फाटी जाइनी दस्ते जाइनी माने भांगी जाइनी सिस्टम दबी गला जस्ट सो लेट वेट इज गिवन ऑन द पिस्टन तापरे कोन हबो व्हेन द वेट्स आर ग्रेजुअली रिमूव्ड हमें तो धीरे धीरे वेट गुडा को गोटे गोटे बस्ता धीरे धीरे बाहर करवा ग्रेजुअली हम देखिबा जे ये भी धीरे धीरे रिमूव ये भी धीरे धीरे ऊपर को उठुछि व्हेन द वेट्स आर when the weights are gradually removed
when the weights are gradually removed যেতବେଳେ weight গুড়াক gradually ଆମେ remove କରୁଛେ the gas expands gas ଟା କ'ଣ ହେଉଛି expand କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି and reaches a state of initial थिला P1 B1 T1 B P2 V2 T2 from A of P1 V1 T1 so P1 V1 T1 थिला P1 V1 T1 रु P2 V2 T2 को ये कौन है एक्सपांड करिया को लगिला क्लियर so P1 V1 T1 डा एक्सपांड करिया को लगिला P2 V2 T2 को इज इट क्लियर सर आउटरे कोइ आमे वेट पकेले ता ऊपर देखो सुश्री वेट पकेले का ऊपर ए पिस्टन ऊपर ऊपर वेट पड़िला हमर वेट जेते पड़िबो से कोन जाइथिबो दबी की थिबो धीरे धीरे आमे गोटे गोटे वेट बाहर करबा वेट बाहर करले धीरे 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 से ऊपर को उठिबो एबले पिस्टन दा उठिबो कि नहीं सो उठिला पर फाइनली कोठी पहुंचला P2 V2 T2 इनिशियल कोड थिला A P1 V1 T1 बुझियला यस सर सर पिस्टन माने कोन पिस्टन माने देखो मा तुमे देखिथिबो बहुत गुड जगह तुमे देखिथिबो हैंड पंप जोडा हमर हैंड पंप हमें ये कोडी तुम्हारो साइकिल यूज साइकिल रे पंप देला वाला में गोटे दऊ तो ए जो ऊपर पार्ट टा को जे पिस्टन एडा पंप जाइथिबो पंप टा तुम्हारो साइकिल रे लागिथिबो एति ना तो ए ऊपर पार्ट को जे तुम्हारो पिस्टन ऊपर भागडा माने जहा ऊपर दिया होची एक्चुअली प्रेशर जोटा कि तुमरो एटे रबर थिबो तळु को आसीबो राइट आ जदि एटा भलो हेतिबो सी ऑटोमेटिक ऊपर को उठी जो ना नहीं देखिछो ना नहीं यस सर बस सो सेडा होची पिस्टन बुझिला तो ए जो हेला भितरे लेट्स एडा हम जदि कहबा लेट्स तुम्हारा वॉल्यूम केते सपोज हमें जदि कहबा केते एरिया बढ़ीची ए एरिया आ तुम्हारा dx लेंथ बढ़ीची सो हमें लिख परिबा लेट्स द gas expands up to length dx लेंथ जाए कौन हम गैस टा एक्सपांड करने को लगे आ वॉल्यूम आरे जदि हम देखिबा वॉल्यूम केते लेट्स वॉल्यूम केते वॉल्यूम तो नहीं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट्स ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A be the area of cross section of the piston. So piston जोडू जति की रहला सेति की एरिया को हमें कहले A आ केति की डिस्टेंस एक्चुअली मूव कला ना dx ताले हमें कोन कहि परिबा देन वी कैन से दैट so we can say that dw is equal to केते आसीबो dw is equal to p a dx p होची कोन प्रेशर a dx a होची वॉल्यूम dx so किम देला ना ए जो जगहटा दिस इज इक्वल टू योर p a dx प्रेशर थिला माने प्रेशर इज इक्वल टू p2 माइनस p1 a केते एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एठी रो और dx केते उच्चता उठीची राइट PA dx so dw is equal to PA dx और A dx को हमें लिख परिया dv बा वॉल्यूम वेक्टर so dv is equal to A dx dv is equal to A dx dv माने कौन that is your volume ठीक है वॉल्यूम and this is your infinite small volume बहुत कम मात्रा infinitely small volume बहुत कम वॉल्यूम रही which is equal to ADX कारण बहुत कम दूरता भी उठी तो वॉल्यूम भी कमी जाइए बेसी बड़ ना कि अति छोट ना सो dv is equal to ADX ताला में इधे ADX जगह dv पकेले p dv आसीगला आमे देखिले जे इडार वॉल्यूम कोडू कोडी की बढ़ी v1 to v2 सो
total work done is obtained. Total work done is obtained is total work done obtained is केते वर्क डन हेछि हमें जब देखिबा कोन हबो ना w is equal to integration over dw. Zero to w, that is integration over v1 to v2 कारण v1 initial थिला v2 final pdv. okay, so this is the expression for work done. clear? एटा apply हबो सबुठी बुझियला आ कार डाउट अछि लास्ट पॉइंट बुझियला देखो वॉल्यूम डा एक्चुअली इनिशियल के थिला v1 थिला फाइनल के आसला v2 आ प्रेशर जदि हम देखिबा एटा गोटे आइसोबारिक प्रोसेस पई ही नॉर्मली pdv तुमरो प्रेशर p हैला माने p2 p1 भीतर जो प्रेशर सेटा होची p p2 p1 इज इक्वल टू p आ dv होची चेंज इन वॉल्यूम आ कारण वर्क डन रो ऑलरेडी हमर आसिला dw इज इक्वल टू pa dx is equal to pdv, adx is equal to dv वॉल्यूम. ठीक अछि ना बुझिला नहीं बेबी? नेक्स्ट टाइम देखिबा आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस रे कोन सेम रहइबो कांस्टेंट टेम्परेचर. सो इट तुमरो टेम्परेचर कांस्टेंट रहइबो. इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट रहले हमें जानि छे वर्क डन रो एक्सप्रेशन कोन वी नो w इज इक्वल टू कोन इंटीग्रेशन ओवर pdv v1 to v2 and as your dw integration over 0 to w. here is w, so w is equal to integration over 0 to w is which is equal to integration over v1 into pdv. clear? Yes, sir. For ideal gas pv is equal to कौन nrt. pv is equal to nrt, so pdv is equal to केते आसीबो ताले nr pdv is equal to nrt, so p is equal to केते आसीबो ताले nrt by dv. ना हला नहीं भूल हैला pv is equal to nrt, so p is equal to nrt by v for ideal gas equation. एटा को अप्लाई करिवा nrt by v ताला हम एटे पुट करले कोन आसीबो पुट करले ना इंटीग्रेशन ओवर v1 to v2 dw जगह रे पड़िबो nrt by v dv. ताले एटा कोन हो nrt कॉमन बाहर पड़िबो बाहर को पळे आसो इंटीग्रेशन ओवर v1 to v2 dv by v. गोटे फार्मूला मन रख इंटीग्रेशन ओवर dx by x कौन फार्मूला दिस इज इक्वल टू केते ln x मन अछि ना मन नहीं वेरी गुड. सो इट इज इक्वल टू nrt कारण वॉल्यूम चेंज हो बट तुम्हारा आइसोथर्मल रे टेम्परेचर चेंज हो नाही. nrt कौन हो एटा ताले ln v and here is v1 and here is v2. फर्दर केते आसीबो फर्दर सॉल्व कले सो w is equal to कौन आसिला nrt अच्छा लॉन्ग लॉग रे कन्वर्ट कर देले कौन हे जिवो 2.303 nrt 2.303 nrt log ln दा log हे जिवो एटा कौन हे जिवो v2 minus log v1 or you can say here that log v2 divided by v1 which is equal to your 2.303 rt by 2.303 rt log v2 by v1.
So this is the expression for work done in an isothermal process. Is it clear? Isothermal process. Let it be question number 1. ना कार डाउट अच्छे आइसोथर्मल प्रोसेस को नहीं की डाउट अच्छी की किसी सर ये लॉन v रो वैल्यू पड़िला सर log v2 और log minus v1 मिल सर log v2 minus log v1 log v2 minus log v1 log v2 minus log v1 केम देला अच्छा एडा एडा एक्चुअली ln दा log हैला सो v जगह रे v2 पड़िला ठीक अछि v जगह रे v2 पड़िला v2 minus v1 माने v जगह रे v2 minus log v1 2.303 ln दा log रे कन्वर्ट हेले 2.303 log हैला क्लियर ना बुझिलानी बुझिलानी नहीं बुझिलानी बुझी दूची देखो log v थिले ना ln v आगो ln v आसिला एक्चुअली अरे जदिन देखिबा ln v आसिला v1 to v2 তাহলে এটা কোন হবে ln v2 minus ln v1 বুঝিলা এটা যেতলে হায়ার লিমিট আর লোয়ার লিমিট কোন পড়িব যেতবেলে भी सपोज एटी तुमरो x आसिला এটা 0 to a हेले कोन पड़िबो x जगह रे a पड़िबो minus 0 मन कर एटी आसिला a to the power x 0 to 5 हेले कोन हो a to the power 5 minus a to the power 0 एबे बुझा पड़ला हायर माइनस अपर लिमिट এটা इंटीग्रेशन रे रहिछि सो w is equal to 2.303 rt log v2 by v1 क्लियर हेले भी कोड गोटे भूल अछि nrt हां 2.303 nrt log v2 by v1 हबो जो 2.303 सेटा कहा गेले लॉन्ग रो हम जेतले एडा को हम टिके मो सिंपलीफाई कर दो छले कि छाड़ो एडा एते लिखिला आडको बहुत डिफिकल्ट लागुथिबो बोले तुमरो जेतु एडा धारणा नै ना तो आ परे कोन हिथियो लिखियो छाड़ो आउ थर आउ गोटे स्टेप टा आगु कर देले आउ टिके भलो बुझि जिवो कोन बना nrt हम एडे nrt जिनसिंदी ln v2 दिस इज इक्वल टू nrt ln आउ कोन रहिछि हमरो v जगह रे v2 पड़िबो माइनस ln v1 पड़िबो बुझा पड़ला एबे यस सर फर्दर ln रो गोटे प्रॉपर्टी अछि दैट ln a minus ln b is equal to ln a by b is equal to ln a by b ताले एटा कोन हो nrt ln v2 by v1 क्लियर बुझियला आगे दुर्गा प्रसाद देवता मु दुर्गा प्रसाद देवता ये दुर्गा प्रसाद देवता तुम्हें रेगुलर क्लास करूछ बहुत बढ़िया रेगुलर क्लास करूछंदी यूट्यूब रे दुर्गा प्रसाद देवता बढ़िया दुर्गा प्रसाद देवता नमस्कार सो nrt log ln रू मन रखो ln x is equal to 2.303 log x this is equal to 2.303 log x ताले एटा अप्लाई करले ln जगह रे कोन हो this is equal to 2.303 nrt log v2 by v1 nrt log v2 by v1 so w is equal to केता आसीबो 2.303 log nrt log v2 by v1 क्लियर
बुझेला Yes, sir. next isobaric process next jiba eta asila this gives the expression for work done in an isothermal process. ଗୋଟେ isothermal process ପାଇଁ work done ଏଟାର expression ଆମେ ପାଇବା ଏଇଠୁ ओके तापर ଆମେ ଆସିବା next bit 1 ପରେ bit 2 ଯିବା that is isobaric process The previous page to go. sure Complete. isobaric रे हमर प्रेशर कोन रहछि कांस्टेंट for isobaric process कोन आसीबो pressure remains constant ताले हमें लिख परिबा dw is equal to pdv थिला so dw is equal to pdv pressure constant ताले इंटीग्रेशन करले 0 to w this is equal to 0 to v so आसीबो केते 0 to w એટલે माने एठी केते वैल्यू आसीबो w is equal to एटा p बाहर को पळे आसले v राइट p into एटा v w let it be v1 let it be v2 so एटा कोन p v2 minus v1 अगेन आउथरे कहि दोछि जेतोले v1 थिला माने इनिशियल थिला वॉल्यूम सेतोले वर्क डन 0 थिला बट जेतोले वॉल्यूम चेंज हे कि इंक्रीज होला v2 को सेतोले वर्क डन w होला सो एटा हम कहि परबा w is equal to p into v2 minus v1 एटा गोटे एक्सप्रेशन आउ कोन हे परिबो फर्दर वी नो pv is equal to nrt वी नो आमे न जानथिले ले लिखिबा कोन वी नो आमे समस्त जानु दैट pv is equal to nrt so pv1 is equal to nrt1 again pv2 is equal to nrt2 further p v2 minus v1 केते हो nr t2 minus t1 ओके nr t2 minus t1 हले कोन हो Del T. del t very good so एटा आसीबो del t ताले एटा कोन हिजो p v2 minus v1 is equal to nr t2 minus t1 बा nr del t भी लिखिले भी हबो सो हमें एडे w जगह रे हमें पुट करि परिबा पुटिंग दिस here we can get w is equal to p into v2 minus v1 जगह रे कोन पुट करिबा nr t2 minus t1 बा nr del t w is equal to nr del t आ कोन r जगह रे हम जान से cp minus cv r is equal to कोन cp minus cv so cp minus cv into del t okay clear these are the expression for work done in isobaric process
ओके नेक्स्ट आछि तुमरा वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बिट 3 इज सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस अच्छा आइसोकोरिक रे कोडा कांस्टेंट आइसोकोरिक रे कोन कांस्टेंट रे क्लास सर वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट वेरी गुड एटी तुमरा कोन कांस्टेंट रे वॉल्यूम कांस्टेंट रे कोन हो एटा dv is equal to 0 so for isochoric process dv is equal to 0 ताले वर्क डन कोन आसीबो dw is equal to pdv which is equal to p into 0 that is 0 so work done is equal to 0 for sorry w is equal to integration over 0 to w integration over pdv is equal to 0 कारण dv टा 0 so এটা भी 0 होला क्लियर आइसोकोरिक प्रोसेस पई वर्क डन कोन हो सबले 0 इज इट क्लियर साइको टाइगर आर की वैल्यू क्या होती है सर आर रो वैल्यू होची तुम्हारा 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स as well as 2 Kelvin mole inverse and 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse. So these are the values of R actually. Universal gas constant. ताले for adiabatic process यार जदि हम देखिबा यार टाइम लागिबो केवल हमें तार एक्सप्लेन माने तार वैल्यू डा ही लिखि देबा वर्क डन रो फार्मूला डा हमें तार डेरिवेशन करिबा नाही we are not going for derivation okay so write down for work done in an adiabatic process for adiabatic process W is equal to asibo nr T2 minus T1 divided by 1 minus sigma 1 minus guy और sigma भी किसी जगह pv to the power gamma sorry 1 minus gamma this is equal to your nr del t by 1 minus gamma which is equal to your ncv del t এটা মনে রাখো কেবল डेरिवेशन आसेनी एमितिर वर्क डन पार्ट रो तो एटा एते आसीबो नाही एग्जाम पर्पस पई केवल मन रखो ठीक है व्हाट इज गामा वेयर गामा इज इक्वल टू गामा सा रे गामा नहीं गामा सो गामा इज इक्वल टू योर गामा को हमर कोन को जिवो गामा इज इक्वल टू cp by cv that is your heat capacity ratio gamma is equal to cp by cv that is heat capacity ratio by heat ratio भी कह जाए किसी जगह heat ratio भी कह जाए so it was all about work done part next class रे हम देखिबा second law of thermodynamics सेकेंड लॉ पर हम देखिबा सेकेंड लॉ एवं ता सहित हम देखिबा एंट्रोपी इन द रिमेनिंग पार्ट अगेन लेट मी रिपीट आज हमें कौन पढ़िले जनरली हमर देखतिले जे तुम्हारा एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन रे del u 0 होची ओके एडियाबेटिक फ्री एक्सपेंशन रे del u 0 साइक्लिक प्रोसेस पई du 0 हबारु dq = dw हबो further first law of significance direct relationship between heat and work it does not predict the direction of heat flow limitation गोटे तापर further आस्तिले हमरो work done in thermodynamics work in thermodynamics is w is equal to p integration over 0 to w that is integration over v1 to v2 pdv so solve कले isothermal पे आसिला कोन ना 2.303 nRT log v2 by v1
आइसोबारिक प्रोसेस पे आसिला W is equal to PdV बा NCP minus CV into del T. Again isocoric पे 0, adiabatic पे W is equal to NR T2 minus T1 by 1 minus gamma NCB delta T. What is gamma? Gamma is equal to your specific heat ratio. This is specific heat ratio. Okay. Thank you for joining the session. Now I have to go for another class. Thank you.